अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म अ कंप्लीट जीआई एग्जामिनेशन। नो द क्लासिकल टीचिंग इज के यू शुड डू इंस्पेक्शन, palpation, percussion and auscultation, but with the time एग्जामिनेशन जीआई का एग्जामिनेशन है, इट हैज़ इवॉल्व। स्पेशली अगर आप एमआरसीपी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनमें कुछ और चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना होता है, जैसे कि यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पेशेंट, पेशेंट के साथ अच्छी रैपो डेवलप करनी है, पेशेंट की डिग्निटी का ख्याल रखना है, पेशेंट के कंफर्ट का ख्याल रखना है, एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन पेशेंट को प्रॉपर कवर करना है आपने। ये सारी चीज़ें आपके इन 4 स्टेप्स के साथ काउंट होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जामिनेशन के दौरान मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ किस लिए कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उस स्टेप का। तो एज आई टोल्ड यू, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट करने पे आपने राइट साइड से पेशेंट को अप्रोच करना है। राइट साइड से अप्रोच करने के बाद आपने पेशेंट के साथ इंट्रोडक्शन करना है, अपनी रैपो डेवलप करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद है। मैं आपके पेट का और आपके चेहरे का मुआयना करूंगा, उसके साथ हाथ और पाँव का भी मुआयना है। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? माय नेम इज सानी। अच्छा सर, तो इंट्रोडक्शन हुआ, पेशेंट से थोड़ा सा रैपो डेवलप की, उसके बाद हम जनरल इंस्पेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्पेक्शन में first of all you need to know about the proper exposure. Normally it is recommended that the patient should be exposed till the mid thighs, लेकिन during examination setting it is expected that the patient should be exposed till the level of anterior superior iliac spine. तो एक्सपोज करेंगे, मैं ये ज़्यादा ज़रा नीचे करूँगा ताकि मैं आपका ज़रा मुझे करूँ, ताकि ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्पेक्शन, हाथ आपका कर लीजिए। बिफोर इंस्पेक्शन आपने एक चीज नोट की होगी कि पेशेंट का बेड जो है इट इज एट 45 डिग्री। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इट शुड बी एट 45 डिग्री, लेकिन जब आप पल्पेशन पे मूव करते हैं तो द बेड शुड बी एज फ्लैट एज पॉसिबल एंड द पेशेंट इज कंफर्टेबल। सो टू स्टार्ट विद द इंस्पेक्शन यू गो टू द फुट एंड ऑफ द बेड। फुट एंड ऑफ द बेड पे आप जाते हैं और पेशेंट को एक जनरल लुक आप देख लेते हैं। आप देखते हैं अगर बेड साइड पे कोई टेबल पड़ा हुआ है, कोई मेडिकेशन है, उनको आप असेस कर लेते हैं। जनरलाइज पैलर तो नहीं है पेशेंट का, आप असेस कर लेते हैं पेशेंट की ascites अगर आपको कोई लग रही है या एनी विजिबल कैपिट मेडूसी वो आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद आप दोबारा से पेशेंट के राइट साइड पे आएंगे और यू विल स्टार्ट योर इंस्पेक्शन विद द हैंड्स। अब हैंड्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइन हैं जो कि आपने देखने हैं। उसके लिए आपने पेशेंट से कहना है कि आप अपने हाथ ऐसे टच कर सकते हैं और इनको टर्न कीजिए। ओके, अब हैंड्स में आपको इंस्पेक्शन पे आपको पाल्मर एरिथेमा मिल सकता है, इस तरह कोलिक लिवर सिरोसिस में डुपिटेंस कंट्रैक्शन मिल सकता है, जो कि आपको थिकनिंग ऑफ टेंडन ऑफ द रिंग फिंगर आपको मिलेगा। इसके बाद आपने हैंड टर्न ऑन करने, आप नीचे रख सकते हैं। फिर यू विल लुक फॉर द क्लबिंग। क्लबिंग के लिए आप एक फिंगर लेंगे और एट द लेवल ऑफ द फिंगर जाके आपने देखना है इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ एंगल बिटवीन द नेल बेड एंड द नेल। इसी तरह आप नेल्स पे आपको अगर पेशेंट को जीआई फाइंडिंग है तो यू कैन फाइंड ल्यूकोनिकिया, काइलोनिकिया इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। के लिए आप हाथ रखें। Next we'll move on to the pulse. Pulse के लिए you need to have a watch and you will calculate the pulse for 10 seconds. Also you will note down the volume of the pulse, the character of the pulse. Next step में I will move on to the examination of the axillary lymph nodes on both sides. हाथ बिल्कुल ढीला छोड़िएगा। मैं जरा आपके यहाँ पे मुआयना करूँगा, मीडियल, लेटरल एंड एपिकल लिम्फ नोड्स। उसके बाद आप दूसरी साइड पे आप देखेंगे, आपने पेशेंट की हैंड को ऐसे स्टेबलाइज करना है, विद अदर हैंड यू विल एग्जामिन द लिम्फ नोड्स। Now we move on to the examination of the face. उसके लिए सबसे पहले आप आईज देखेंगे। आईज में यू कैन फाइंड द जॉन्डिस, पैलर इन द पेशेंट। आप अपने आंख को नीचे ऐसे खींचेंगे इस तरह से,
and you look for any pallor or jaundice. Thank you. No, next step is to examine the oral cavity of the patient. Oral cavity में सबसे पहले तो आप बाहर देख लेंगे if there is any angular stomatitis, then we look for epithelial ulcer. In case of Crohn's disease or inflammatory bowel disease, we can find any pallor if present. So बड़ा मुंह खोल के कर रहे हो? We'll look for any angular stomatitis, which is obviously not there in this patient. There are no epithelial ulcer. आप अपनी ज़ुबान ऊपर करिए, ज़ुबान ऊपर करें. There is no pallor. Thank you. So next step is examining the cervical lymph node. Cervical lymph node you can examine from the front as well as the back. But in this video, I'll let you know how to examine the cervical lymph node from the front. So first of all, आपने pre-auricular और post-auricular आप एक ही गो में चेक कर सकते हैं. Then there is submandibular, submental lymph nodes. There is anterior cervical lymph nodes and supraclavicular lymph nodes. इसमें एक specifically ख्याल रखना है. There is a Virchow's lymph node which is present in left supraclavicular fossa. It signifies the presence of stomach ulcer. तो वो अगर आपको मिलता है, it can help you with the diagnosis. Next is you look for any spider nevi or presence of any gynecomastia. Spider nevi usually, if they are present, they should be located in superior vena cava distribution in both in front or back. तो आपने क्लोजली देखना है कि उसमें कोई lymph nodes तो आपको spider nevi नजर आ रहे हैं. You will look for gynecomastia. For gynecomastia, you will palpate the nipples and then you will ask the patient to sit up. आप बैठेंगे प्लीज. इस तरह आपने बैक से भी पेशेंट को देखना है कि कोई स्पाइडर नेवाई आपको नजर आते हैं या कोई स्कार मार्क्स, स्पेशली इफ देयर आर एनी स्कार मार्क्स रिलेटेड टू नेफ्रेक्टमी. थैंक यू. अब आपको सीधा अगर लिटा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको. पेशेंट से पूछ लिया, पेशेंट को आपने फ्लैट लिटा देना है 0 डिग्री पे. नाउ आपने जब पेशेंट को फ्लैट लिटा दिया तो नेक्स्ट आपने जो काम करना है कि पेशेंट को क्रीप से अपने पेशेंट की इंस्पेक्शन करनी है. बिफोर एग्जामिनिंग द स्टोमक, बिफोर इंस्पेक्टिंग द टमी, I'll take this opportunity to see for any presence of any AV fistula in the arm. आपने दोनों आर्म में AV fistula देखना है. AV fistula तो नहीं present, or if you can find a AV fistula, you need to feel it with the back of the hand on both sides. इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है, यू विल हैव टू सी फॉर एनी नीडल मार्क्स. अगर फिस्टुला है और उसमें कोई नीडल मार्क्स हैं तो इट मीन दैट द पेशेंट इज अंडरगोइंग करंट डायलिसिस. ठीक है. उसके बाद फिर आप करीब से पेशेंट को देखेंगे, स्पेशली फॉर एनी स्कार मार्क्स लाइक Mercedes Benz scar mark of liver transplant. You can find a scar mark, J-shaped scar mark in iliac fossa for renal transplant. Similarly, if patient has multiple scar marks, it shows that the patient may be suffering from inflammatory bowel disease, indicating multiple surgeries. After inspection, next step is palpation. Palpation के लिए आपने पेशेंट से पूछ लेना आपको पेट में कहीं दर्द तो नहीं है. मैं आपके पेट पे हाथ से मुआयना करूंगा, अगर कहीं तकलीफ होती है मुझे बताइएगा, मैं रुक जाऊंगा. For palpation you should be at the level of patient tummy. और आपने हैंड की फिंगर्स से, फ्लैट हैंड फिंगर्स से आपने palpate करना है. फर्स्टली आपने सुपरफिशियली palpate करना है in a S-shaped manner to cover all the quadrants of abdomen. Next is you will palpate the patient deeply. Palpation में you can find any abdominal mass, you can find any transplanted kidney, or you can even find polycystic kidney, any enlarged liver. We'll start with the palpation of organs. सबसे पहले आपने liver को palpate करना है. Liver के लिए we'll start with from the right iliac fossa and we'll go upward and we'll ask the patient to take deep breath, or we'll palpate with the radial border of the hand. और जैसे मैं जब आपको कहूँगा आपने लंबी गहरी सांसें लेनी है, ठीक है, लंबी गहरी सांसें लेते हैं. And you will move with the inching method.
अगर liver palpable है, you can feel the liver around the border of this finger, the index finger. इसके बाद percussion है. Percussion के दो methods हैं. Either you move from right iliac fossa up till the upper margin of the liver, or you can feel the lower border of the liver and percuss downward. Usually in MRCP examination, they recommend percussing all the way up from the right iliac fossa. We can find a dull percussion note here. यहाँ पे आप देखेंगे कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है. एंड यूजली इन दिस पेशेंट द लिवर स्पेन इज नॉट enlarged. In case it is enlarged, you can measure it with the measuring tape. Now next we will palpate for the spleen. For spleen we will palpate from the right iliac fossa towards the left upper quadrant. Again आपने लंबी सांस लेनी है. अगर आपको स्प्लीन मिल जाती है तो you can palpate it, and there is a indication for enlarged spleen that you cannot go above it. अगर आपको स्प्लीन नहीं मिलती, then you will ask the patient to turn over to yourself and then palpate again to find any small enlargement in spleen. मेरी तरफ मुड़ जाएंगे प्लीज, मेरी तरफ टर्न कर लेंगे. You will start palpating again. I'll start from the middle क्योंकि I know the spleen is not massively enlarged. So we couldn't find any spleen in this patient. दोबारा मुड़ जाइए. Thank you. Next is palpating the kidneys. Kidneys में we use two hand method. We put the right hand under the back of the patient and we keep the left hand above. इसमें एक गलती जो होती है कि बहुत से कैंडिडेट ये करते हैं कि ये ascites से कर रहे होते हैं. You need to make sure to palpate the kidney. You have to keep the whole hand under the back of the patient. जैसे कि देखिए आपने ठीक है रिलैक्स कीजिए. एंड नाउ आपने दूसरा जो हैंड है वो बिल्कुल अम्बलाइकस के साथ रखना है और आपने दोनों हाथों से दोनों प्रेस करना है. एंड यू कैन फील द लोअर पोल ऑफ द किडनी इफ इट इज इनलार्ज. अगर किडनी इनलार्ज है तो आप उसको फिर कंफर्म कर सकते हैं बाय बैलोटिंग मेथड. बैलोटिंग मेथड इज जब आप हाथ रखते हैं और फील द किडनी, यू बैलोट इट बाय द हैंड अंडर द बैक ऑफ द पेशेंट एंड यू कैन फील इट. नो अदर साइड, उसमें भी आप राइट हैंड नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से आप प्रेस करेंगे. एंड इफ देयर इज इनलार्ज किडनी यू कैन फाइंड इट बिटवीन टू हैंड्स and then you can do the बैलोटिंग मेथड. नेक्स्ट विल लुक फॉर द ascites. आपको ऑब्वियसली इस पेशेंट में कोई ascites नहीं मिल रही है, लेकिन आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू हाउ टू चेक फॉर द ascites. यू विल परकस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड वन ऑफ द फ्लैंक्स, और जहां आपको डलनेस नजर आ जाएगी वहां आप रुक जाएंगे और पेशेंट को टर्न ओवर करेंगे. यू विल परकस टुवर्ड वन ऑफ द फ्लैंक्स. आइडियली इन दिस केस आई विल परकस टुवर्ड द लेफ्ट साइड. अगर आपको डलनेस मिलती है तो आप पेशेंट को अपनी तरफ रोटेट करेंगे, इस तरफ मुड़िएगा. and then you will allow sufficient time, at least 30 seconds, for the fluid to move towards center, and then you will percuss again towards the center. और अगर ascites होगी तो you can find the level of the ascites. Thank you. दोबारा सीधे बैठिएगा. नेक्स्ट आपने अस्कल्टेट करना है पेशेंट. फर्स्ट आई विल अस्कल्टेट फॉर द रीनल ब्रूई इन बाउल साउंड. अगर लिवर इनलार्ज है तो यू कैन अस्कल्टेट फॉर द हेपेटिक ब्रूई एज वेल, बट इन दिस केस वी डोंट हैव एनी इनलार्ज लिवर, सो वील अस्कल्टेट फॉर रीनल ब्रूइज ऑन बोथ साइड ऑफ द अम्बलाइकस. Meanwhile, अगर जब मैं राइट साइड पे अस्कल्टेट कर रहा हूँ तो आई विल आल्सो लिसन टू द बाउल साउंड वेदर देयर आर हाइपोडायनेमिक, हाइपरडायनेमिक और नॉर्मल. इसके बाद आप पीटल एडिमा के लिए देख लेंगे पेशेंट को. So once you have done, you have completed the examination, you will cover the patient again. And अपने पेशेंट का शुक्रिया अदा करना है. थैंक यू.
Finally, GI examination mein before concluding, when you turn to the examiner, you have to say that I would like to complete my examination with full set of observation, including blood pressure, oxygen saturation. I look for the hernial orifices and I'll do DI on the patients. Thank you. So this is all for today. Hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. If you have any concerns or any queries regarding clinical examination, you can ask me under the comments section of this video, and I will be happy to answer those questions. Thank you, and Allah Hafiz till next time.